हेलो, मेरा नाम मीरा है एंड वेलकम टू दिल दिया गल्ला। लास्ट वीक आपने जोसेफिन से सुना, जोसेफिन हु वेंट थ्रू क्लिनिकल डिप्रेशन हरसेल्फ, और उन्होंने अपने बारे में बताया और व्हाट काइंड ऑफ टूल्स दैट शी गॉट एंड हाउ टुडे शी केम आउट ऑफ इट अ बेटर पर्सन देन व्हेन शी वाज इन 2012। एक्चुअली मैं जोसेफिन को जानती थी 2012 में, बट मुझे खुद भी नहीं पता था दैट शी वाज गोइंग थ्रू इट, एंड दैट्स जस्ट एन एग्जांपल ऑफ when you go through these things and there's shame and stigma attached that you cannot share with everybody. Now I know, and it makes me think, no wonder I couldn't talk to her, no wonder she wasn't replying to my messages, no wonder she wasn't attending any of the family and friends events. So the perspective जो मैं आज आपको दूंगी वो है कि how there are people around us that are going through things, and sometimes we know about that and sometimes we don't. इनफैक्ट हम लोग की एक कॉमन फ्रेंड, हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी जिनकी बारे में हम अभी बात कर रहे थे, एंड फ्रॉम आउटसाइड शी सीम टू हैव अ परफेक्ट लाइफ, एवरीथिंग वाज गोइंग फॉर हर, एंड वन डे ऑल ऑफ अ सडन शी क्लाइम्ड ऑन द 6th floor of a hospital and she committed suicide, and the entire community was shook because she was pretty well known, and बाद में पता चला that she was going through depression for most of her life and she kept it to herself. So what I've learned, and when Josephine has been through it, और जो उन्होंने अपने बारे में बात करा कि very important if you're going through that is to not bottle it up. Like Josephine said, there are solutions available, there is treatment available, there is life at the end of the tunnel. You can come out of depression, but you have to be your own champion. And just like anything else, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं and you know that doctor is not prescribing correctly, you go back again and you say, doctor, this is not working for me. So that needs to happen the same way with your mental health. You have to, once you realize that you can get better, thank you Josephine so much for sharing your story. Once you realize that there is a light at the end of the tunnel, you have to champion your own cause. You have to pick up that phone. You have to contact the person, whether it is your family or whether it is your family doctor or whether it is your closest friend, and just start with, I need help. And I assure you, you will get the help. But you need to share that. You need to tell people around you that there is something going on and you need help. I think that's one thing that I've educated myself on as well. Second, we talk about so much about stigma and this shame and this blame and this guilt that one feels. We really have to shift our perspective and associate mental health exactly like physical health. But I think where people don't realize is mental health is not visible, whereas physical health is visible. You see a person who's been to an accident, you see a person who's visibly not himself, and you offer that sympathy. Oh, I can understand what you're going through. Whereas mental health is all up here. You cannot see what a person is going through. So maybe that's the disconnect where people are not able to understand and not able to offer the empathy when they cannot really visibly see it. But please realize that there is something going on there. Just because you cannot see it doesn't mean it's not there. That's very true. And the third thing that I've realized is this is something I've educated myself on as well. It's the difference between sympathy and empathy. And our community, I think, needs a lot more empathy. Because sympathy is something that you share, is a shared feeling with somebody else. A friend is not, somebody's family passed away, and you know that you've gone through, or somebody that you know has gone through. That's a shared feeling of losing a loved one, and it comes very easily. You offer that sympathy. Oh my God, I understand what you're going through. Whereas empathy is something that you might not share with them, but you try to understand. So for example, if Josephine said, Neera, I'm not feeling well today, and I would be like, I'm feeling well. Such a nice day. Everything's going for you, going well for you. Why don't you feel well? But for me to say, okay, Josephine, that's, I'm sorry to hear that. Even though I'm not feeling like her, but that's empathy. I may not understand, I may not share your feeling, but I'm trying to understand what you're going through. And that's what we need to do more of with each other. And I think that's my biggest learnings. Good tips, yeah. So at the end, मैं दो चीजें कहना चाहूंगी यहाँ पे. We need to talk more about this.
एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग को चाहिए कि हम 10 जगह से चीजें सुने फॉर अस टू रजिस्टर अस अप हियर. एडवर्टाइजिंग भी आप देखते हैं, एक बार पे आपको याद नहीं आता. जब आप 10 जगह से देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, तो यू रजिस्टर, आपको एक चीज याद रहती है. सेम विद मेंटल हेल्थ, बात करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए दिल दिया गल्ला को, और आगे ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाइए. दैट्स वन थिंग. सेकेंड इज दैट अगर आपको लगता है कि आप शेयर नहीं कर सकते अपनी फैमिली से, इवन फ्रेंड से, आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं. वो कॉन्वर्सेशन टोटली कॉन्फिडेंशियल है, आगे किसी के साथ शेयर नहीं होगी. तो ये एक स्टेप आप एकदम से ले सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए. और फाइनली, दिल दिया गला इज अ ग्रेट चैनल. ये शुरू किया गया है साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए, बिकॉज हमारी कम्युनिटी में हमें रिकग्नाइज करना है ये स्टिग्मा बहुत बड़ा स्टिग्मा है. इट इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट अनएड्रेस्ड इश्यूज, और सब इसके थ्रू गुजर रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट एडल्ट्स, इट्स किड्स, इट्स youth, Even seniors, our parents. This disease has left nobody untouched. And I can guarantee there are people around you, आपके दोस्त, आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं लोग ये गुजर रहे हैं. तो if this content resonates with you, अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं और ये सोचते हैं कि ये बात आगे बढ़ानी चाहिए, तो प्लीज फॉलो करिए, शेयर करिए इसका कंटेंट, और ये कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाइए. हेलो एवरीवन, मैं फिर वापस आ गई हूँ. हमारा ये जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ के बारे में, उसको कंटिन्यू करने के लिए कि हम अब कम्युनिकेशन विल कंटिन्यू ऑलवेज, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम हर एक को रीच आउट करें इसके बारे में. ये मेंटल हेल्थ के स्टिग्मा को हम रिमूव करें, और अगर एक आदमी तक भी मेरी आवाज पहुंच सकती है, देन आई एम सक्सीडेड कि एक जान बचाने के लिए. राइट, ये बहुत जरूरी है. इसीलिए मैं बार बार आऊंगी, इसी के बारे में बात करूंगी. प्लीज आप सुनते रहेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ के इश्यूज में हमें अवेयरनेस रेज करना बहुत जरूरी है, और लोगों को रीच आउट करना बहुत जरूरी है, और हेल्प करना बहुत जरूरी है. इसीलिए मैं बार बार आती रहूंगी और आपको रिक्वेस्ट करती रहूंगी, आप हमारा दिल दिया गल्ला की बात सुने रहिए, कि आपके लिए कुछ ना कुछ इसके द्वारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप हेल्प ले सकते हैं. अगर आपकी कोई फैमिली या फ्रेंड्स आपको लगता है कि इस डिप्रेशन का दौर में गुजर रहे हैं, प्लीज आप उनको थोड़ा देखिए, हेल्प करिए और रीच आउट करिए. एंड थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस.